Hello, am I audible? Okay, somebody asked what type of side chain is present in tryptophan and what another amino acid mentioned. Basically, tryptophan, I have mentioned that point too. Due to its hydrophobicity, uh, phenylalanine lies in the core of protein. तो जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो उनकी साइड चेन्स होती है वो कंट्रीब्यूट करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी को. यस सोनाली यू आर राइट. जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं बट उनको हमने फर्स्ट कैटेगरी से डिफरेंशिएट कैसे किया था. वो एलिफेटिक साइड चेन्स थी. जो फर्स्ट कैटेगरी हमने वाइफ देखी ये थी एरोमेटिक एंड जो हमने नेक्स्ट देखी GAB LIMP ये सब क्या थे एलिफेटिक साइड चेन्स थे. बट दोनों का ही नेचर हाइड्रोफोबिक है. So next category that we have for amino acids is hydrophilic amino acid side chains, and this is further divided into two categories. The first one is polar uncharged and the another one is ionizable side chains. तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेबल साइड चेन्स और इसके न्यूमेरिकल्स. So ionizable side chains can either be positively charged or it can be negatively charged. So before discussing these amino acids in detail, let's go back to the basic structure that was this was the basic structure. So I'm asking now, what will be the effect of pH on this basic structure of amino acid? Will the charge here change or will it remain same? At low pH, solution में H plus ions की concentration high होती है. And at high pH means basic solution OH ions की concentration high होती है. So will it affect the basic structure of amino acid? Yes, it will change. At low pH or the acidic pH, what it will happen, the amino group here will take one H plus ion and get converted into NH3 positive. Okay, and at high pH, this NH2 will remain same, but from COH group, this hydrogen is removed and it will form COO negative. So these were the conditions at high and low pH. What about at neutral pH? At neutral pH, the basic structure will be which form is this? Dipolar form. Means in this form, both positive as well as negative charges are present. So this form is known as zwitterion. And the net charge here, what is the net charge here? Net charge is 0, one positive and one negative will be 0. Now today's topic is positively charged and negatively charged amino acids. So how will these side chains affect the charge of these particular amino acids? So if in a side chain, the amino acid consists of
amino group, it will also be protonated, means it will accumulate H plus ions. Is it fine? If the amino acids consist of carboxyl group, then this carboxyl group will be deprotonated and it will form COO negative. So these side chains will also contribute to the net charge. Is it fine? There is one another term. Yes, Richa, you are right. There is another term, the pH at which there is no charge on a particular amino acid is known as its isoelectric point, or PI. जो ज्विटर आयनिक फॉर्म में जो भी पीएच होगी सॉल्यूशन की, मींस देयर इज नो नेट चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, तो उस पीएच को हम क्या बोलेंगे, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. इज दिस पॉइंट क्लियर? Is it clear? Okay, I'm repeating from starting. This is the structure of basic amino acid that consists of one amino group. Amino group here is capable of accepting one H plus ion, and accepting H plus ion is known as protonation. Simple, it is taking a proton, so protonation. Similarly, amino acid also consists of a carboxyl group. It has capability of losing one proton or H plus ion, and that process is known as deprotonation. And this protonation and deprotonation, these are pH dependent things, or I can say it depends on pKa, acidity constant. जितना pKa कम होगा उतना एसिडिक ज्यादा होगा. तो जो भी साइड चेन्स की पीके वैल्यूज होगी उन पर उनके ये चार्ज डिपेंड करेंगे, मींस वो कब H प्लस आयन एक्यूमुलेट करेगा और कब H प्लस आयन को लूज करेगा, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, उनकी पीके वैल्यूज पर. और पीके वैल्यूज हमें कैसे पता चलती है? दीज आर एक्सपेरिमेंटल डेटा. जब हम टाइट्रेशन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा बेस यूज करते हैं? NaOH. उसके साथ हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम उनकी पीके वैल्यूज की एक ग्राफ बनाते हैं. दैट ग्राफ इज नोन एज टाइट्रेशन कर्व. फिर मैंने बताया एट लो पीएच द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस आर हाई. सो इफ अ particular amino acid is present in low pH, this NH2 has the capability of protonation, so it will accept the proton. At high pH, this proton will be lost in the solution and it will accumulate the negative charge. These were the conditions at low and high pH, but at pH around 7 or neutral pH, the amino acid exists in dipolar form, means it consists of both charges, positive as well as negative charges. And the pH at which Zwitter ion occurs in a solution, that pH is known as isoelectric point, denoted by Pi. इतना क्लियर है? अभी तक यही बताया. Is it clear?
ओके, रिलेशन मैंने बताया था, पीके जो होता है वो एसिडिक कंटेंट, एसिडिक कांस्टेंट होता है। वो किसी भी पर्टिकुलरली कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको मेजर करता है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। तो पीके जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। और पीके जिसका बहुत ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा बेसिक है। तो कैन आई स्टार्ट अमाइनो एसिड्स नाउ? ये कोई डाउट है अभी इस स्लाइड पे जो भी मेंशन्ड है बोर्ड पे, इसमें कोई डाउट है? ओके, तो आयनाइजेबल साइड चेन्स में हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स। सिंगल लेटर डेजिग्नेशन है इनका HRK, H फॉर हिस्टिडीन, R फॉर आर्जिनिन एंड K फॉर लाइसिन। यहाँ पर डिफरेंट हो रहा है, हिस्टिडीन तो सेम है, आर्जिनिन किसका है, आर किसका है, आर्जिनिन का, एंड के किसका है, लाइसिन का। क्योंकि उधर हमने देखा था एल उसका हो चुका पहले ही ल्यूसीन का, और ए हो चुका पहले ही एलेनिन का। तो ये डिफरेंट हैं, ये याद रखने। यस, एस्पर्टेट एंड ग्लूटामेट हैं नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स में, उनको हम डिस्कस करें। फर्स्ट वन इज हिस्टिडीन, three letter code is HIS and single letter code is H. This amino acid is precursor of histamine. It is precursor of histamine. It is an excellent biological buffer at pH, जो कि physiological pH होती है हमारी, that is from 7 to 7.4. This is the structure of histamine and यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ये पूछा जाता है कई बार।
and this ring, it is known as imidazole side chain. Imidazole side chain. These 2 points are important in case of histidine. Next amino acid that we have is arginine. It acts as biological buffer. Biological buffer होता है क्योंकि जो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है मींस जिस पर वो ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो फिजियोलॉजिकल पीएच जो कि हमारी होती है 7 से 7.4 उसके नियर अबाउट होता है. ये सेकेंड ही रिपीट किया मैंने. इट एक्ट एज बायोलॉजिकल बफर. I'm drawing again. See here, C double bond CH. Then this C is bonded to nitrogen here, and this C here is bonded to nitrogen again, and here this is carbon and double bond. So which atom lacks number of bonds? I think it's complete. And the single letter code is R. So lysine and arginine, these two amino acids, these two are basic amino acids and they are present in the histone protein. ये बहुत important है and बहुत बार पूछा गया है. Lysine and arginine, these are basic amino acids and these are present in histone protein. And what is the significance of histone protein? DNA that is negatively charged, it wraps around this histone protein and histone forms its octamer. Basically ये पूछा जाता है which amino acids are present in the histone protein. कई बार ये पूछा गया है lysine and arginine are basic, which charge do they consist of? Positive. ये सब क्वेश्चंस आए हैं lysine and arginine related. The structure of arginine is what I have to repeat, Ashu. It is also the precursor of nitric oxide. Okay, I'll repeat it down. It helps in recovering of injuries, precursor of NO, and helps in recovering injuries. Basically, it is involved in tissue repair. ओके अभी ये पॉइंट मैंने बताया था लाइसिन एंड आर्जिनिन. लाइसिन इसके बाद डिस्कस करूंगा. तो ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं. इन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. सी यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप है वो डबल बॉन्डेड है एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज, this positive charge is transferred to this and this also because of this double bond. And these two amino acids, these are involved in the formation of histone protein, and histone protein के अराउंड डीएनए रैप होता है. डीएनए कौन से चार्ज का होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है.
और प्रोटीन में पॉजिटिवली चार्ज कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, तो ये हेल्प करते हैं बाइंडिंग में. Is it fine? Can I move on now? And no, nitrous oxide. This is the structure of lysine, and lysine is necessary building block for all proteins. It plays a major role in calcium absorption. It helps in tissue injuries. Is it fine? Building block for proteins. Next, we have our negatively charged amino acids. कौन कौन से हैं? D and E. D is asparatic acid, E is glutamic acid. सभी स्ट्रक्चर साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा टू फाइंड द नेट चार्ज, तो थोड़ी हेल्प मिल जाएगी. This is the structure of glutamic acid. So glutamic acid or the glutamate, it is the most abundant excitatory neurotransmitter. It is most abundant excitatory neurotransmitter. It is also involved in like a urea cycle, or in simple terms, body's disposal of excess or waste nitrogen.
जब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर पर्टिकुलरली यूरिया साइकिल है, तो दिस ग्लूटामिक एसिड इट इज इन्वॉल्व इन डिस्पोजल ऑफ excess or waste nitrogen. Is it fine? Next we have is asparatic acid, that is ASP, and D. The structure for asparatic acid is so asparatic acid or aspartate uses it is produced from oxaloacetate. This is particularly involved in tricarboxylic acid cycle TCA or Krebs cycle. So by the process of transamination, what it is the transfer of amino group. Means ये जो amino group है ये एक molecule से दूसरे molecule में transfer कर दिया जाता है. तो oxaloacetate forms asparatic acid by the process of transamination. It is also the part of urea cycle and also participates in gluconeogenesis. Is it clear? Can I give numericals now? To another biomolecule. ये जो भी डिटेल्स तुम्हें प्रोटीन्स की अभी अमाइनो एसिड्स की बताई गई है और फिर बोला गया है कि ये उसका पार्ट है, उस रिएक्शन का पार्ट है या उस साइकिल में इन्वॉल्व है, तो ये बात तक याद रखना, बात तक नोट्स में रखना आपको. फिर तुम देखना कि जो भी साइकिल या रिएक्शन बोले गए थे वो वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है. ग्लूकोनियोजेनेसिस. So are you guys familiar with this term? What is gluconeogenesis? ये क्वेश्चन पूछा गया कैटबी में, बट ये हम कार्बोहाइड्रेट्स में पूरी साइकिल ही डिस्कस करेंगे, बट मेरे को ध्यान आ गया तो मैं बता रहा हूँ. गैटबी में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस. बेसिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस is the synthesis of sugar with sugar, glucose, synthesis of glucose. बट वहां पर ट्रिकी ऑप्शन थे, शुगर या फिर हम ग्लूकोज किसे सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रिकर्सर्स पे क्वेश्चन था, नॉन शुगर प्रिकर्सर्स और शुगरी प्रिकर्सर्स. तो ये दो ऑप्शंस प्रेजेंट थे. इट इज अ प्रोसेस बाय विच
synthesized from known sugar precursors. और known sugar precursors कौन कौन है, जैसे कि लैक्टेट है, पायरुवेट है, और ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे। यहाँ पर अभी मैंने ये डिस्कस कर लिया, तो मैं अभी बता देता हूँ। अमाइनो एसिड्स की एक और क्लासिफिकेशन है जो कि है प्रोटियोजेनिक एंड अनदर वन इज ग्लूकोजेनिक। Proteogenic amino acids are involved in formation of proteins, and glucogenic amino acids are involved in formation of glucose. For example, like this, asparatic acid is a glucogenic amino acid. It is involved in the formation of glucose. Okay, somebody asked me to draw histidine. This is histidine. Known sugar precursors are lactate, pyruvate and glucogenic amino acids. Means जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। शुगर्स हम जनरली किनको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। शुगर इज अ जनरल टर्म फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन है? जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। अगर हम अगर पॉलीसेक्राइड्स की तरफ जाएं तो ग्लाइकोजन है। ये सब क्या है? शुगर्स है। Okay, now the question is find the net charge Okay, solve karo. And I'm coming in 2 minutes. फर्स्ट का आंसर लिखो चैट बॉक्स में। Am I audible? Am I audible? So आंसर लिखो
लो पीएच पर आर्जिनिन का क्या चार्ज होगा? मीन सॉल्यूशन में H+ प्रेजेंट है, प्रोटोनेशन जहां भी हो सकते हैं, जितने भी NH2 प्रेजेंट है वो सब क्या हो जाएंगे NH3 में, CO नेगेटिव था वो क्या हो जाएगा COOH में। तो मीन्स जितने भी अमाइनो ग्रुप्स है उतना ही पॉजिटिव पीएच पे। हेलो, एम आई ऑडिबल? समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट? सेकंड वो लिखो भाई, तुम मेंशन करे थे तब। अभी मैं चुप, अभी मैं बोल नहीं रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग। ओके, आर्जिनिन को बाद में देखते हैं, पहले ग्लाइसिन को देखो। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ, ये +3 किसका लिखा है? जो अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूं, पहले ग्लाइसिन देखते हैं। लो पीएच है तो H+ होगा, यहाँ यहाँ हर जगह H+ प्रेजेंट है। COH H+ नहीं ले सकता, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, तो कौन बचा? सिर्फ नाइट्रोजन बचा है, तो वो ले लेगा H+, तो वो क्या बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। लो पीएच पर चार्ज क्या होगा? +1।
अभी बात करते हैं हाई पीएच की। तो सॉल्यूशन में किसकी प्रेजेंस ज्यादा है? हाइड्रो हाइड्रोक्सिल आयंस की। OH नेगेटिव। यहाँ पर जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ड्यू टू इट्स pKa वैल्यू, इट रिलीजेस इट्स प्रोटोन, एंड यहाँ पर क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। एक पीएच पर, जो कि लो पीएच थी, वहां पर प्लस चार्ज था, न्यूट्रल पे डाइपोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव है। फिर फर्दर ये वाला भी हाइड्रोजन लूज कर रहा है और ये वाला भी लूज कर रहा है, मींस NH2 तो हो गया वो पहले, फिर बाद में ये भी लूज कर देगा, तो यहाँ पर क्या चार्ज हो जाएगा? माइनस। तो नेक्स्ट ट्राई करो वलीन। वलीन का बताओ मुझे। अभी थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। What will be the charge on valine at low pH and high pH? Okay, yes, same. So now move to asparatic acid. Now move to asparatic acid. अभी वो एसिड है तो उसके पास एक्स्ट्रा क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। लो पीएच पर क्या चार्ज होगा? +1। ओके। किसी ने जीरो भी बोला लो पीएच पर, जीरो तो नहीं होगा। यस, +1 एंड -2। व्हाट अबाउट ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड? ओके, फाइन। नाउ लेट्स मूव टू लाइसिन। लाइसिन का देखो, लाइसिन के पास एक्स्ट्रा क्या है? अमीनो ग्रुप है। ओके, अभी थोड़े जो कॉम्प्लिकेटेड बचे हैं, एक ही बचा है हिस्टिडीन, उसका बताओ। हिस्टिडीन की जो रिंग है उसमें अमाइनो ग्रुप कॉन्जुगेटेड है, वहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 2 नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, बट एक के पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो वो और हाइड्रोजन नहीं ले सकता। जो तुम्हें अभी मैं बता रहा हूँ, ये हमने प्रैक्टिस कर लिया सबकी। जो तुम्हें याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है? एक तो ग्लाइसिन बेसिक के लिए, मींस बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट बेसिक अमाइनो, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा याद रखना है ग्लूटामेट, एंड तीसरा याद रखना है हिस्टिडीन, because all these three amino acids are given examples in Leninger book, और उससे बाहर या उससे ज्यादा, उससे डीप में कभी नहीं पूछा जाता। इन 3 अमाइनो एसिड्स का गिवन है book। इन 3 का समझ में आ गया, मीन्स हम सबका कर सकते हैं। ओके, आई हैव टू आस्क वन थिंग, कि जो
सैटरडेज एंड संडेज पर क्लास होगी वीकेंड्स पे, तो मैं एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जेनेटिक्स और इम्यूनोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों के अलावा कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे? इम्यूनो किसी को नहीं पढ़नी? and even you guys can like see these repeated lectures on Google Classroom. ज़्यादा cost नहीं है उसकी, you can subscribe for that particular thing. Okay, Richa is saying no, but immunology से भी questions आते हैं, लेकिन वो बाद में देखेंगे, तो अभी it's comparatively easy. I think genetics is easy, but let's see. तो अभी जो अमाइनो एसिड्स बचे हैं वो आज ही कर ले खत्म, फिर कम से कम हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 बच्चे हैं। पोलर अनचार्ज, अभी 8 ही मिनट बची हैं, तो वो कल से ही स्टार्ट करेंगे। जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है वो जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे अभी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं वो अमाइनो एसिड से ज्यादा आते हैं। स्ट्रक्चर को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। यस, लेनिंजर 7th एडिशन। In arginine, somebody is asking about arginine. In arginine, arginine is bonded with 3 amino groups. One is from the like जो बेसिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है वो तो है ही, दूसरे के पास एक डबल बॉन्ड है, और तीसरा सिंगल बॉन्डेड है NH2। बट जो डबल बॉन्डेड NH2 है वो पॉजिटिव चार्ज पहले ही शेयर कर रहा है। लाइक जो नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मैं थोड़ा सा बना के बता रहा हूँ। जो नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो कुछ ऐसा है। ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी ये दोनों नाइट्रोजन शेयर कर रहे होते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास NH3 प्रेजेंट था, तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो लो पीएच पर +2 होगा और हाई पीएच पर सिंपल -1 होगा। आया समझ में आर्जिनिन का? We will have +2 and -1 in case of arginine. Okay, when I was discussing aromatic amino acids, I left one thing. I said we measure the absorbance by using UV spectroscopy. So UV spectroscopy is based on Lambert-Weir law. What this law suggests is, according to Lambert's law, it says absorbance is directly proportional to path length. Path length of what? Cuvette. क्यूवेट जो भी हम क्यूवेट यूज करते हैं, ग्लास की या क्वार्ट्ज की। एंड Beer's law suggests that absorbance is directly proportional to C, that is concentration. Concentration of what? Concentration of protein. Yes, at high pH it is -1. अगर कॉलेजेस गए हो या लाइक थर्ड ईयर में होंगे, तो हम सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री लैब में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सब करते हैं, सब ब्रांचेस के करते हैं बच्चे। तो ये याद रखना है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। यहाँ पर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं एल एंड बी में कि विच इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। So the final equation here becomes A equals to epsilon LC. एंड यहाँ पर कौन से अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व थे? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स W, Y and F. एंड yes,
A is also denoted as optical activity or density, OD. Is it clear? So that's all for today. It is molar extinction coefficient. Epsilon is molar uh, extinction coefficient. Thank you, everyone. That's all for today. A stands for absorbance. और उसी absorbance को हम OD के टर्म्स में डिनोट करते हैं.